Assalamu alaikum. How are you kids? I hope you all are fine and doing well with the grace of Allah Almighty. So, I'm your teacher. My name is Mumal Khalid and I'm going to teach you our today's lesson. Our today's topic is the sound of I. आज हम सीखने वाले हैं sound of I. I is a two-lettered word. The first letter is I and the second letter is E. जब लेटर I और लेटर E आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो इनका साउंड बन जाता है I. क्या साउंड बन जाता है? I. I. The letters I and E go together and sound like I. 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 Here is the song for I. The captain said aye, aye. The captain said aye, aye. Stand up straight, don't be late. The captain said aye, aye. Let's look at some words for I. Tie. I tie. Pie. I pie. Fries. Ice. Fries. Flies. Ice. Flies. This has been I. So kids, do you want to listen the story of I? क्या आप I की स्टोरी सुनना चाहते हैं? Okay, let's listen it. Sound I. A boy is going to a party. Everyone will be wearing costumes. The boy wants to dress up as a sailor, like his dad. His dad gives him a sailor's hat and shows him how to salute. The boy stands to attention and salutes, saying, "Aye, aye." The captain said aye, aye. The captain said aye, aye. Stand up straight, don't be late. The captain said aye, aye. I. Mr. Mike lived on a farm. He loved wearing ties. One day, after his hard work on the farm, he went inside to have some lunch. First, he ate a pie. But he was still hungry, so he decided to eat some fries. He went outside and saw a swarm of flies. He moved forward and saw that one of his cows died. He was upset and cried a lot. Let's revise, kids. Died. Eyes, cries. Buy. Tie. Eyes, flies. Okay, tell me how many letters in this word? इस word में कितने letters हैं? There are 3 letters in this word. इस word में हैं 3 letters. T, I and E.
Okay, tell me how many sounds in this letter? इस word में कितनी sounds हैं? There are 2 sounds in this word. इस word में 2 sounds हैं. Okay, tell me which letter is this? ये कौन सा letter है? This is letter T. This is letter T. Can you tell me the sound of T? क्या आप मुझे T का sound बता सकते हैं? The sound of T is T. The sound of T is T. And what are the sound of these 2 letters? Can you tell me the sound of these 2 letters? क्या आप मुझे इन 2 letters का sound बता सकते हैं? The sound of these 2 letters are I. And the word is tie. The word is tie. ये क्या word बन गया? Tie. What is the sound of this letter? The sound of this letter is D. This is letter D, and the sound of this letter is D. And the sound of these 2 letters are I. The sound of these 2 letters are I. And our word will be die. What is the meaning of die? Die का क्या मतलब होता है? Die का मतलब होता है मरना, मर जाना. Can you tell me which letter is this? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा लेटर है? This is letter L. This is letter L. What is the sound of letter L? Letter L का क्या sound होता है? The sound of letter L is L. The sound of letter L is L. And the sound of these 2 letters are I. The sound of these 2 letters are I. इन 2 letters का sound होता है I. And our word is lie. हमारा word है lie. Okay, tell me what is the meaning of lie? Lie का क्या मतलब होता है? Lie का मतलब होता है झूठ. क्या मतलब होता है? झूठ. Can you tell me which letter is this? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा letter है? This is letter P. This is letter P. And the sound of letter P is P. The sound of letter P is P. P का sound होता है P. And the sound of these 2 letters are I. इन 2 letters का sound क्या होता है? I. And our word will be pie. Our word will be pie. Can you tell me which letter is this? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा letter है? This is letter S. This is letter S. And the sound of letter S is S. Letter S का sound होता है S. And the sound of these 2 letters are I. If we blend I or S sound, then the sound will be eyes, eyes, rise, 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 fries. Our word will be fries. Do you like fries? आपको फ्राइज पसंद है? किस किस को पसंद है फ्राइज? ओके, नाउ टेल मी हाउ मेनी लेटर्स इन दिस वर्ड. इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं? देयर आर 5 लेटर्स इन दिस वर्ड. एंड हाउ मेनी साउंड्स इन दिस वर्ड? इस वर्ड में कितनी साउंड्स हैं? देयर आर 4 साउंड्स इन दिस वर्ड. ख, r, khur.
I cry. Cries. 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 The meaning of cries is रोना. Cries का मतलब होता है रोना. क्या मतलब होता है क्राइड का? क्राइड का मतलब होता है रोना. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस वर्ड्स. अब हम इन वर्ड्स को क्या करेंगे? रीड करेंगे. कैन यू रीड इट विद मी? क्या आप मेरे साथ इसको रीड कर सकते हैं? अगेन. ओके, सबसे पहले देखें. ड आई die. कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में? There are 3 letters in this word. There are 3 letters in this word. And how many sounds in this word? There are 2 sounds in this word. कितनी sounds इस word में? 2 sounds हैं. First is d and second is I. The whole word is die. Die. Okay, tell me what is the meaning of die? Die का मतलब होता है मरना या मर जाना. Okay, move forward. This is letter L and the sound of letter L is L. L. The sound of these letters are I. I. The word is lie. Lie. What is the meaning of lie? Lie का क्या मतलब होता है? Lie का मतलब होता है झूठ. क्या मतलब होता है? झूठ. Okay, let's move to the other word. This letter is P and the sound of letter P is P. The sound of letter P is P. क्या sound होता है P का? P. And the sound of these 2 letters are I. Pie. Pie. Pie कहते हैं खाने की चीज़ को. एक डिश होती है, उसका नाम क्या होता है? Pie. Okay. This is letter T and the sound of letter T is T. And the sound of these letters are I. The word is T I. Tie. Tie. टाई क्या होती है? टाई वो जो बॉयज़ पहनते हैं ना, उसको कहते हैं टाई. कौन कौन से बॉयज़ टाई पहनते हैं? नाम बताइए मुझे अपना. आप लोग पहनते हैं? ओके. दिस इज लेटर सी and the sound of letter C is K. This is letter R and the sound of letter R is R. The sound of these 2 letters are I and the sound of this letter is D. The word is K R I D. K R I D. K ride. K ride. Cried. The word is cried. The meaning of cried is रोना. cried का मतलब होता है रोना. D I D. D I D. Died. Died. The word is died. Died का मतलब होता है मरा हुआ. I D. Lied. I D. Lied. The word is lied. D R I D. Dried. D R I D. Dried. The word is dried. Dried. Dried का मतलब होता है सूखा हुआ. F and the sound of letter F is
R, and the sound of R is R. I, D, and the sound of letter D is D. Right, fried. The word is fried. Fried का मतलब होता है तला हुआ. सो डियर किड्स, अब आप लोगों ने इन सारे वर्ड्स की क्या करनी है, रीडिंग करनी है. बहुत ध्यान से करनी है और अच्छे तरीके से करनी है. एक लेटर, एक साउंड बता के करनी है ताकि आपको रीडिंग करनी आ जाए.